So, does FMG get enough clinical exposure? What's the difference in clinical exposure medical students get in Indian colleges and MBBS abroad? MBBS abroad में clinical exposure is the biggest point of concern. И здесь тоже кровь переливать. Стамок. Гастроэнтеролог, перикард, ликвор перикард. So the patient was having colon cancer and off-screen doctor ने बहुत सारे palpations भी बताया था, palpation of abdomen. कई यूनिवर्सिटीज़ को वो इतना भी कर सकते हैं कि उन यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स तो एम्स दिल्ली के कंपैरेबल है. They guys get some incentives to bring and get you admitted in their universities. I cannot say more, but who knows. What I personally do to get more clinical exposure irrespective of any university. So come on, let's talk about all of this in today's video. Does FMG get enough clinical exposure? What's the difference in clinical exposure medical students get in Indian colleges and MBBS abroad? And is the FMG, which is an exam जो कि हम सबको देना होता है after completing our MBBS from abroad, उसका passing percentage 10 to 20% है, at max 25, 21 इस range में. It's really low. Is it because of lack of clinical exposure or what is it? So come on, let's talk about all of this in today's video. Hello everyone, I'm SAKSHAM, a 5th year medical student in Russia. So अगर मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट करे बिना एक क्लियर कट आंसर दूँ without any bullshit, MBBS abroad clinical exposure is really pathetic. जो भी clinical exposure हम लोग को मिलता है in universities, it's really bad. It's not at all comparable with any Indian college, let it be private, government, deemed college, कुछ भी हो. MBBS abroad में clinical exposure is the biggest point of concern और बहुत ख़राब होता है. That's it. इससे ज़्यादा short में clear cut में बोल नहीं सकता था. But now some of you students might ask कि भैया मैंने तो YouTube पे सर्च किया था, वहाँ पे tons and tons इतने सारे मेरे को वीडियोस मिले about clinical exposure, shorts देखे हैं मैंने. बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाते हैं हम जा रहे हैं ऑपरेशन, हमको ये भी मिल रहा है, ये clinical exposure है, ये है. So I just want you guys to see this video. मैं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे डाल दूँगा that I made a couple of years ago, but I never posted on this channel. And watch all of these clips. 1, 2, 3. 1, 2, 3. А причина этого кровотечения, как вам объяснили? Опухоль какая-то? Опухоль все-таки, да? Опухоль. А где опухоль? В желудке? Да. Я не знаю, конечно же. Сказали. Ну, тьюмор of stomach. Bleeding. А было ощущение слабости, потемнения в глазах, да? Да, слабость. Давление артериальное, может, снижалось, да? Да. Извините. Мне там 4... Геморрагия. Шок. Мне там 4... Можно животик посмотреть? Нет, я не в этом плане. Паник сауна. Герния. Umbilicalis. So the patient was having colon cancer and off-screen doctor ने बहुत सारे palpations भी बताया था, palpation of abdomen, but obviously because of ethical reasons मैं उसको record नहीं कर सकता था and it would have not been good, but उन्होंने पूरा explain करा था कि what the situation was like and she was having cancer, so it was acute और अभी उन्होंने time break दिया because he is writing prescription for the patient and he said that he'll explain that thing again, but yes, the situation was not really good and auntie was having a lot of pain because उनको pulmonary artery में problem था, thrombolytic में. So let's see. अभी उसके सामने explain क्या करते हैं डॉक्टर क्लास के अंदर. Тьюмор, канцер.
of enteral region of stomach, gastrointestinal stomach tumor, and bleeding of from gastro, bleeding. Tomorrow operation of stomach, resection of stomach. After operation, very important, look pericard, liquor in pericard. Pericard, heart, pericard, column of pericard. Хочешь, можно лежать? Сейчас 130 на 80. Иду с врачу вечером. Он по консистенции понос был? Ну, жидкий. Жидкий. Ну, Да. Вот. Поехал на работу. С работы шел. А была слабость, Ну, головокружение. вот такой состояние был, как будто заболел, как будто простуду в течение вот этого дня, в понедельник. Поехал на работу, с работы шел, потерял сознание. Увезли на скорой, короче, открылось кровотечение, отвезли в Пироговку. А рвоты крови не было? Вот когда потерял сознание, ну, там начали мне реанимационные эти, ну я там на проходной, на заводе работал. Вот стошнило кровью, а до этого ничего не было. Вот. Vomiting. Увезли в Пироговку, там вот остановили кровотечение. Плазму, кровь лили. Ставили зонд Блэкмора, не помните? Стоял Нет, такой? зонд не ставили, у меня повторно открылось кровотечение. И сказали, если третий раз откроется, то будем ставить этот зонд. Ну, слава богу, обошлось. Да. И уже потом признали, что есть. March Yeah. and plus 7 days, 17 March. In 17 March, she will have 40 weeks of gestation, and we can calculate. So नॉर्मल ऑपरेशन देखने आए हैं अभी वो था सी सेक्शन का बट वो थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ अनदर प्रॉब्लम जो दूसरी पेशेंट थी वो प्री टर्म थी और उसका प्लेसेंटा अब्रप्शन हो गया सो इससे सारे डॉक्टर्स और मेडिकल नर्सेज अभी उसी केस में बिजी सो वी हैव टू वेट maybe 30 minutes more and then we'll go into the operation theater. Ended by vacuum extraction, for example, Or C-section, or maybe C-section. Yeah. So this condition is indication for emergency ended of labor. The patient is old? Yes, 82. Oh no, sorry, 75. 75. सो यार मोस्टली ये सारी क्लिप्स को एडिट करके अच्छे से एक प्रेजेंटेबल वे में दिखाया जा सकता है इन विच यू माइट थिंक कि हाँ MBBS अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोजर तो है, थोड़ा ख़राब हो सकता है, इंडिया जितना ना हो बट है, बट द ऑनेस्ट आंसर इज दैट इट इज़ नॉट ट्रू. जो तुम्हें वीडियोस में दिखता है दैट इज़ ओनली 10 to 20% इन रियल लाइफ. वो कैमरास के थ्रू आपको अच्छा दिखाया जा सकता है. एंड मोस्टली ऑल ऑफ दीज एजेंट्स और स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हैं, दे डू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज. आई सॉ रिसेंटली ऑन यूट्यूब. और वो लोग खुद प्री क्लिनिकल ईयर्स में होते हैं विच इज़ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिसको कि हम लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं. उनको अब तक क्लिनिकल एक्सपोजर ना तो सब्जेक्ट्स आए हैं ना उनको मिला होगा जितना एक्चुअली 5th, 6th, 4th clinical subjects में मिलता है और necessary होता है. So being a 5th year student, I'm telling you guys that yes, clinical exposure is the main problem. India से compare बिल्कुल नहीं करा जा सकता है clinical exposure को. It's really really bad. हाँ, कई एजेंट्स, कई कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे कंपेयर करते हुए. कई यूनिवर्सिटीज़ को वो इतना भी कर सकते हैं कि उन यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स तो एम्स दिल्ली के कंपेरेबल है. That's all bullshit. कहीं से भी वो सच नहीं होता है. Of course there are incentives तुम लोग को लाने के. ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट्स भी तुम देखेंगे जो कि भर के वीडियोस डालेंगे about clinical exposure. Of course, just understand that they guys get some incentives to bring and
get you admitted in their universities. I cannot say more, but who knows. So what to do? अगर आप privileged हो, अगर आपके पास में option है, if you're looking, अगर आपका schooling हुआ आपने need दिया, then just go for any Indian private government any university. If you're privileged enough to get any private, just go for it, because if clinical exposure is your point, and it should be, of course it's important, it's more than 50% of MBBS, so yes, and if you have an opportunity, then just go for it. Get any Indian college. It would be far better in terms of clinical exposure and in overall terms too, as compared to MBBS abroad. But still, अगर सब लोग नहीं होते, हम लोग भी हैं, कितने बच्चे आते हैं बाहर. If you guys are coming, you don't have the privilege and you don't have opportunity to get any college in India, then how can you get more clinical exposure being in specific university? कोई से भी university, does not matter. Does not even matter country कौन सी है, I don't care, कोई सी भी university में हो, but how can you get more clinical exposure? What I personally do to get more clinical exposure, irrespective of any university, I'm not promoting any single university in this, but just explaining you how, being a foreign student, FMG, you can get more chances and more clinical exposure. That's what I'm talking about. So I'm gonna make a video about it and what I do to get more clinical exposure. So if you guys would be interested in watching that video, then just go in playlist में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और I'll just pin it above here, I button, या फिर कोई से भी उसमें डाल दूँगा end scenes. So that was it for today's video. It was short and it was just point to point. I could have made a video comparing कि हाँ इंडिया से इतना होता है, कई अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो, लाइक कजान फेडरल ले लो, वहाँ पे एक्सपोजर कुछ नहीं है. पहले बात तो कजान फेडरल मिलती नहीं है, मोस्टली तुम पहुँच ही नहीं पाओगे कजान फेडरल. और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई से भी यूनिवर्सिटी हो, कितनी भी पॉपुलेशन हो, आई थॉट कि कुछ वीडियो बनाऊँ एक्सप्लेनिंग पॉपुलेशन, कि कैसे पॉपुलेशन अफेक्ट करती है क्लिनिकल एक्सपोजर को. द पॉइंट इज़ नहीं, यहाँ इतने पेशेंट्स ही नहीं होते हैं. दूसरा, लैंग्वेज बैरियर इज़ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न. तीसरा, कोई से भी डॉक्टर को इंग्लिश नहीं आती है, तो तुम्हारे टीचर्स को फिर भी आ सकती है, बट जो तुम्हारे अटेंडिंग डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर इन चार्ज होते हैं सर्जरीज में, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, वो सब रशियन में कम्युनिकेट करते हैं. सो इट्स इम्पॉसिबल. यू जस्ट गेट ऑब्जर्वरशिप, जो कि तुम्हें वहाँ खड़े होने को मिल जाता है, तुम्हें देखने को मिल जाता है, तुम्हें एक फील आ जाती है कि हाँ हमने कुछ देखा, एंड दैट्स इट. तुम्हें कुछ एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलती है, और जो एक्चुअल तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए वो नहीं मिलता है इन एनी केस. और यहाँ पे कोई सी भी इंटर्नशिप या ऑब्जर्वरशिप या क्लर्कशिप जिसे बोलते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रशिया में क्लिनिकल इंटर्नशिप कब होती है. सो बेसिकली इंटर्नशिप कुछ नहीं होती. जो हर साल समर्स में वो 2 महीने की एक क्लास लगा देते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, और उसी को वो इंटर्नशिप बोलते हैं, और बोलते हैं कि वो पूरे 6 ईयर के पीरियड के बीच में हमने कर दिया इंटर्नशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती. इंडिया में जाने के बाद में भी तुम्हें इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी. कोई कंपेयर मत करना कि इंडिया में तुमने इंटर्नशिप कर ली तो वो वैलिड होगी, वहाँ जाके कहीं से भी नहीं होती. और वो इंटर्नशिप भी कहने की होती है, टू बी ऑनेस्ट. वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ भी क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना. सो लेट्स keep this video short. The answer was yes, it's pathetic. And if you guys want some tricks, if you have opportunity and you're privileged enough to get any of the college in India, just go for it. And if you are not, or like many of us are not, and that's why I'm even sitting here, and other students too. So if you guys don't have any other option and still want to get more clinical exposure, then I'll make a video about some tips and some tricks that would be really helpful. So yeah, that was it for today's video. See you some other time.